Hello students, welcome back to the class again. So in the last class we discussed regarding quantum number. आम last class रे quantum number विषय पढ़िथिलु. चारि प्रकार quantum number अछि, 4 quantum numbers. So from that we got the idea regarding atomic orbitals. Atomic orbitals like 1s, 2s, 2p, 3s. So these are called atomic orbitals. That means this region or space surrounding the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. न्यूक्लियस बाहर थिबा गोटे जगह जोठी कि इलेक्ट्रॉन पाइबार चांसेस बा प्रोबेबिलिटी बहुत अधिका ताको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहि थाउ. सो कहिथिल तुमको छुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ऑर्डर टू फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वी शुड नो हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप. हमको प्रथम आईडिया दरकार एटॉमिक ऑर्बिटल वाला केमती फिल अप हेबे हला. So there are three rules which govern or control the filling up of atomic orbitals. So I told you their names. First one is Aufbau principle, known as also building up principle. Then next one is Pauli's exclusion principle. Then last one is Horn's rule. So in today's class we will be discussing regarding the rules for filling up of atomic orbitals. So we'll start with your Aufbau principle, which is also known as building up principle. Building up principle. So why it is called building up principle? Now the statement will tell you why it is called building up principle. So the principle states that the atomic orbitals are filled up in the increasing order of their energy. So what does it mean? Amane kon? That is atomic orbital with lower energy will be filled up fast and vice versa. That means the opposite is true. क्या माने बुझिबा के छुआ? The atomic orbitals are filled up in the increasing order of their energy. ता माने कोन ना एटॉमिक ऑर्बिटल वाला केमती फिल अप हेबे ना ताकर एनर्जी ऑर्डर अनुसार जहार एनर्जी कम the atomic orbital with lower energy will be filled up first, then the atomic orbital of higher energy. So atomic orbital with lower energy will be filled up first and vice versa means what? Atomic orbital of higher energy will be filled up next. हला प्रथमे जहार एनर्जी कम से आगे फिल अप होबो तापरे जहार एनर्जी बेसी से आगे फिल अप होबो. Then again the same question arises. Suppose there are two orbitals 1s and 2s which will be occupied first. जहार तुमको लास्ट क्वेश्चन पचारतली दुईटा ऑर्बिटल अछि 1s और 2s ताले किए आगे फिल अप हो ना तुम योर आंसर विल बी 1s because you know it. But why 1s? एबे हम कहि परिबो because 1s has lower energy. प्रिंसिपल कोन कहउछि आबो प्रिंसिपल ना जहार कम एनर्जी से आगे फिल अप हो एटॉमिक ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी विल बी फिल अप फर्स्ट. तेनु आमे जत कहउछि जे 1s ता आगे फिल अप हो ताले that is sure the 1s has lower energy. ता माने 1s रो एनर्जी कम अछि से लागि से आगे फिल अप होछि. But how to know that? So this is the single case when we can remember that 1s has lower energy than 2s. आमे गोटिया केस होते मन रख दे परिबा 1s रो एनर्जी कम 2s रो बेसी से लागि 1s ता आगे फिल अप हो. But it cannot be remembered for all the orbitals. So there must be a rule. को rule कहिथिल छुआ? Now that rule is called n plus l rule. N plus l rule. This rule is used to compare the energy of atomic orbitals. So n plus l rule is purely to compare the energy of atomic orbitals. So what is n here? Where n is the principal quantum number. N is the principal quantum number and L is the azimuthal quantum number.
L is the azimuthal quantum number. So तुमको सिखाइली केमती फ्रॉम ए ऑर्बिटल यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n plus l. n and l दुईटा कैलकुलेट करिया भल रकम सिखाइची. So you must have remembered how to calculate the n plus l value of the different atomic orbitals. Okay. So what the rule states? The rule states that the atomic orbital with lower value, the atomic orbital with lower value of n plus l, combinedly n plus l has lower energy and vice versa. That means atomic orbital with higher n plus l value has higher energy. Atomic orbital जहाँ n plus l value कम तार एनर्जी कम and vice versa माने कौन ना atomic orbital जहाँ n plus l value बेसी तार एनर्जी बेसी. So atomic orbital with lower value of n plus l has lower energy and atomic orbital with higher n plus l value has higher energy. And second step is there. In case of a tie, tie means when n plus l value remains the same, becomes the same. तब tie कहबा छ जेतेबेले दुईटा value समान हे जिवो त कोन कहबा छ tie. So in case of a tie, the atomic orbital with lower value, atomic orbital with lower value of n, that means principal quantum number, has lower energy and therefore will be filled up first. तेणु n plus l value rule टा क्लियरली मन रखियो छुआ. दुईटा पॉइंट अछि, दुईटा स्टेप अछि. So this is the n plus l rule. The atomic orbital with lower value of n plus l has lower energy. जो atomic orbital लो n plus l value कम तार एनर्जी कम, जहार n plus l value बेसी तार एनर्जी बेसी. But second point अभी आउट अछि, in case of a tie जेतला n plus l value समान हेला त कोन कहबा छ, it will be called tie. Then the atomic orbital with lower value of n, सेतला हमें दुईटा वैल्यू देखिबेन, will go for only the value of principal quantum number n. So जहार n value कम थिबो तार एनर्जी कम हबो, जहार एनर्जी कम हबो माने प्रिंसिपल कोन कहउची से आगे फिल अप हबो. Okay, so in case of a tie, the atomic orbital with lower value of n has lower energy and therefore will be filled up first. Okay, so this is n plus l rule. एबे छुआ ए दुटा हमें क्वेश्चन पुनी फेरिबा. 1s why it is filled up first as compared to 2s. 1s रो छुआ कंपेयर करिबा 1s. Okay, what will be n value? कोइची सब छुआ a number is n, so for 1s n value is 1. For s subcell l value is 0. कोइची छुआ for s subcell l value is 0, p subcell l value is 1, for d subcell l value is 2, for f subcell l value is 3. तुमको सेटा मन रखियो, you have to remember it. And principal quantum n value टा तुमे लेखा रु पाइ जिवो. So this number stands for principal quantum number. ताले n plus l value केता हो 1 for n, 0 for l. ताले कहि गादे गला 1. 2s रो देखिबा n plus l value केता होची, 2s रो n value will be 2. Again for s subcell l value will be 0. ताले n plus l value केते गला 2. Okay, so जदि हम n plus l value compare करिबा, n plus l value if we compare between these two orbitals, देखो कार कम होची ना 1s has n plus l value of 1, 2s केते होची 2. ताले प्रिंसिपल कोन कहउची छुआ जार n plus l value कम तार एनर्जी कम एवं above principal कोन कहउची जार एनर्जी कम से आगे फिल अप हो. That's why 1s is filled up first as compared to 2s. सेही लागि 1s जेहेतु तार n plus l value कम अछि तार एनर्जी कम एवं above principal अनुसार कोन हबो ना जार एनर्जी कम से आगे फिल अप हो. That's why, so this is the answer of the question जोडा हमको लास्ट क्लास में भी पचारथिली, why 1s atomic orbital is filled up first as compared to 2s. Answer will be in these two rules. Above principle states that जहारो एनर्जी कम से आगे फिल अप हबो, n plus l value कहउची
तो n plus l रूल कहूँ जार n plus l वैल्यू कम तार एनर्जी कम से पैसे आगे फिल अप। ओके स्टूडेंट्स, then next we'll compare some more atomic orbitals and try to find out the n plus l rule correctly. Okay, so students, we just discussed your above principle and n plus l rule. एबे पढ़िलु above principle आउ n plus l rule. So एबे आमी जानि परलु clearly, so we have to calculate the n plus l value of atomic orbital. So in order to know which will be fill up first, आमे जदि जानिया को चाहू छु कि आगे fill up होबो कि फॉर फिल अप होबो, we first have to calculate the n plus l value. Another example, suppose we'll go for 2s and 2p atomic orbitals. There are two atomic orbitals in the second cell, 2s 2p. Okay, so how to know? Now we have to calculate their n plus l value. एकमात्र ऑप्शन होची हमको जानिबार अछि कि आगे फिल अप होबो, we have to calculate their n plus l value. 2s को आसीबा बारंबार कहिछि छुआ, फर्स्ट वन इज ऑलवेज द n वैल्यू, ताले 2s रो n वैल्यू केते 2, तापरे s तुमको एठी उठे ये कर दउछि s p d एंड f, सबसेल वाइज l वैल्यू केते ही होछि ना 0 1 2 and 3. So while calculating this you have to keep these things in mind. So subcell wise you have to remember their l value. एटी देखो 2s for s l value is 0, so n value is 2, l value is 0, ताले केते हेला टोटल n plus l value 2. 2p को आसीबा बर्तन 2p, that means n value is again 2 second cell, then p subcell, for p subcell l value is 1, so 2 plus 1 3, ताले 2s रो n plus l value हला 2, 2p रो हला 3. So which will be filled up first? Na, which one has lower n plus l value? So 2s will be filled up first. बुझिला छुआ बे? तापरे नेक्स्ट आसीबा 2p 3s. Suppose दुईटा ऑर्बिटल रहला 2p 3s. How to know it? Now we have to calculate again their n plus l value. आउथर कैलकुलेट करबा 2p देखो n value 2, for p subcell l value is 1. So n plus l is 3. 3s n value is 3, for s subcell l value is 0. तो देखो एठी छो आसला सेकंड बिट, वी हैव टू अप्लाई द सेकंड बिट. सेकंड बिट कोन कहितली ना, इन केस ऑफ ए टाई एठी समान हे गेला, देखो n plus l value टाई आसी गेला. सो इन केस ऑफ ए टाई व्हाट वी हैव टू गो फॉर? नाउ वी हैव टू गो फॉर n value ओनली. सेतरा n plus l value देखिबानी. सो दिस इज अ टाई, सो देयर इज ए टाई. ए केस रे गोटे टाई आसी गेला, ताले कोन करबा हमें n plus l value को देखिबानी. वी विल गो फॉर n value only. So that atomic orbital with lower value of n has lower energy. एठी n value केते 2p रो ना 2, और n value केते 3, तो कार n value कम अछि 2p, so 2p has lower n value and therefore has lower energy and will be filled up first. तो आगे के fill up होबो 2p आगे fill up होबो. बुझिला छ? तापर मन कर आसीबा गोटे ट्रायड आसीबा गोटे आउट हायर को जाउची 4s 3d. 4s 3d देखिबा n plus l value पकेबा 4s n value is 4, for s l value is 0, so n plus l value is 4. 3d n value for 3d is 3, এই নম্বরটা যাহা সেটা n value, for d subcell l value is 2. So clearly there is a difference. So difference clearly asla, कार n plus l value कम अछि ना 4s, therefore 4s will be filled up first. बुझिला छ? So this is how we have to find out the increasing order of filling up of atomic orbitals. को order रे सबने fill up हेबे. Okay, so based on this we can remember, we can calculate the n plus l value for all the atomic orbitals and know which will be filled up first. Okay, so students, it is best to remember it in form of a picture which will be easy for you to remember. If we go for a picture like this, based on above principle and n plus l rule, the increasing order of filling up of atomic orbitals can be drawn in a single picture. So what you have to do? Now you have to write down like this: 1s, 2
2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, like this. So all the cells have s orbitals or s subcells. So 1 to 7 will be s. Then 1 does not have any p, so p will be started from here. 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Okay. So 1 फर्स्ट सेल रे p सब सेल नाही छ सेटा मन रखिया त 2 रु स्टार्ट करबा सेमति 2 रे d नाही कि बा नहीं त d टा कोठु स्टार्ट करबा एटू 3d 4d 5d 6d 7d हला 3 रो f नहीं त f टा कोठु स्टार्ट करबा छ एटू 4 पाकु सो जहां में पढ़ी सारछु हम सेही अनुसार फिल अप करी 4f 5f 6f 7f okay so this is how you have to write down the different atomic orbitals okay then join them diagonally by an arrow ताको diagonally गोटे arrow द्वारा join कर दो जेमति को join करछु diagonally okay diagonally connect them by an arrow so the arrow shows the direction in which these atomic orbitals will be filled up sei arrow ta jo direction रे जीव छुआ सेही order रे atomic orbital गुडा fill up हेबे देखो arrow को direction रे जाउची सेही direction केवल diagonally connect करियो मन रखी हैला you have to connect them diagonally diagonally जेमति मु कनेक्ट करछि छुआ सेही ऑर्डर रे मन रखिबो then it will be easier for you to remember the sequence in which these atomic orbitals will be filled up not required these are not required because up to 5f will be filling up so this is the graph in which or the sequence in which the atomic orbitals will be filled up so this is the sequence for filling of atomic orbitals so जेतबे तुमे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखिया दरकार हो छुआ you have to draw this picture you have to keep this one in mind हमें देखो जहां जहां n plus l वैल्यू कंपेयर करलु आगे कंपेयर करथिलु 1s और 2s so from that we knew that 1s will be filled up first तो देखो इलेक्ट्रॉन कोठी आसीबो 1s will be filled up तापर we compared 2s and 2p हम जानिथिलु 2s will be filled up first so 1s ru बाहर की इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट 2s will be filled up then it will go to 2p then come to 3s हम 2p 3s भी कंपेयर करथिलु देखिथिलु कोन 2p will be filled up first 2p पर 3s 3s पर 3p 4s so this will be sequence in which these atomic orbitals will be filled up okay so by drawing this picture in the rough page and keeping in mind the capacity of subcells s 2 electrons p 6 electrons d 10 electrons and f 14 electrons okay so capacity of subcells you have to keep in mind and this picture you have to keep in mind ei duita di tom pakhare rahila you can write the electronic configuration of any element given to you je kon se element dele bi tume tar electronic configuration lekhi dabo so this is the sequence for filling up of atomic orbitals this one is the sequence and this is the capacity of subcells hame podi sarchu विषय रे subcell capacity विषय रे only you have to remember these things again तुमको मन रखियार अछि okay students so this is how we have to remember this picture and this capacity so that we can draw
or we can write down the electronic configuration of any element जे कौन element देले तुमे लिखि परिबो. Okay students, so next I'll go to next principle, that is called Pauli's exclusion principle. So students, we discussed regarding your above principle, n plus l rule, and based on that we learned the sequence of filling up of atomic orbitals. आम पढ़िलु above principle, n plus l rule, এবং তারপরে বেস করে দেখিলু যে কোউ সিকোয়েন্স রে atomic orbital গুলো fill up হবে. That you have to remember. Okay. Then next we will go for the next principle which controls or governs the filling up of atomic orbitals. That is known as Pauli's exclusion principle. So why it is called exclusion principle? Now because it excludes the probability of any two electrons having four same quantum numbers, or similar or same quantum numbers. ଯେମିତି କହିଥିଲି ଛୁଆ, your postal address has to be unique. Similarly the postal address of the electrons have to be unique. तो कौनसी दुईटा इलेक्ट्रॉन रो चारटा को क्वांटम नंबर समान हो परिबो नै. दिस इज कॉल्ड Pauli's exclusion principle. तो सेम सेल रे थिबा कौनसी दुईटा इलेक्ट्रॉन रो चारटा को क्वांटम नंबर समान हो परिबो नाही. सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स will have all their four quantum numbers alike. जेमती तुमर दुई जन को पोस्टल एड्रेस समान हबनी, सेमती कोनोसी इलेक्ट्रॉन रो दुईटा को चारटा को क्वांटम नंबर समान हबो नै. Okay, so what is the statement? The principle states that no two electrons will have all their four quantum numbers alike. माने कोनोसी दुईटा इलेक्ट्रॉन रो चारटा का क्वांटम नंबर समान नहीं परिबो नाही. So this is the statement of the principle. No two electrons will have all their four quantum numbers alike. But the conclusion from this one will be something different. What is the conclusion of the principle? That an atomic orbital can accommodate maximum two electrons with opposite spin. So this is the conclusion. So देखो छुआ, statement is something different. Statement गोटे अलग रहउची, conclusion गोटे अलग रहउची. Statement कोन रहउची ना कहिची exclusion principle काहे ना नाम आइची ना, because it excludes the probability of any two electrons having all their four quantum numbers alike. हेई परिबो नाही बोली से exclude कर दोछ. So but the conclusion says that हम पढ़ी साचु ओटा बारंबार कहि साची atomic orbital capacity होची 2 and atomic orbital can accommodate maximum two electrons with opposite spin. So from this statement we have to conclude this one. Can conclude करिवा देखिबा. So let us prove it by contradiction method. Contradiction method कहि दैछि. First we will assume something. आमे प्रथम किछि assume करिवा. So based on that assumption we will get a result. गोटे assumption नबा आमे, let us assume something, तापरे बेस करी हम किछि result पाइबा. If that result is absurd, जदि result टा impossible लागला तुमको, then what will be our conclusion? Now our assumption was wrong. आमे जोटा धरि थिलु सेटा भूल थिला. So that is called contradiction method. So first let us assume that 1s atomic orbital can accommodate 3 electrons. 1s atomic orbital can accommodate 3 electrons. हला तांग नाम कोन दबा छुआ. लेट अस गिव देयर नेम इज E1 E2 E3. तीनटा इलेक्ट्रॉन जो रहबे तांग नाम दबा E1 E2 E3. तांग चारटा क्वांटम नंबर बाहर करबा. कोन N L M and S. चारटा क्वांटम नंबर है. So for these 3 electrons we will find out the set of quantum numbers. ताकर क्वांटम नंबर वैल्यू हमें बाहर करबा. कोन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. को ईयर रहले ताले हम कोन एज्यूम करलु 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ले तीनटा इलेक्ट्रॉन रही परछ. हम लिखि परबा 1s 3 हम एज्यूम करिछु.
सो 1s atomic orbital can accommodate 3 electrons बोली हमें assume करिछु से 3 electrons नाम कोन देलु e1 e2 e3 तो all of them belong to first cell तो समस्त n value समान हबो केते हबो 1 समस्त n value will be 1 so if all the electrons will have same n value काहे की ना they belong to the same cell again they belong to same subcell s subcell तेणु समस्त l value भी समान हबो s subcell पाई l value केते ना 0 all of them belong to the same orbital s orbital तापाई m value केते ना 0 so because all these 3 electrons belong to the same orbital same subcell and same cell तीनटा कोडा को बिलोंग करचंती ना समान ऑर्बिटल तेनु मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समान हबो समान सबसेल s सबसेल l वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर समान हबो समान सेल n = 1 हबो तेनु जेहेतु समान समान ऑर्बिटल रे रहउछ बिकॉज़ दे बिलोंग टू द सेम ऑर्बिटल द फर्स्ट 3 quantum numbers have to be same अब किछ ऑप्शन नहीं तुमर यू हैव नो ऑप्शन बिकॉज़ दे बिलोंग टू द सेम ऑर्बिटल देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर कोई सा छुआ स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव मैक्सिमम 2 वैल्यूज फॉर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन और क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर विल हैव द वैल्यू ऑफ प्लस हाफ आई मीन लेट अस एज्यूम जे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रो वैल्यू होची स्पिन क्वांटम रो वैल्यू होची प्लस हाफ ताले सेकंड इलेक्ट्रॉन रो कोन हबो इट विल बी माइनस हाफ काहे ना आउ वैल्यू तो पॉसिबल नहीं सो let us assume that the first electron has a spin quantum number of plus half ता माने clockwise orientation होची next होची anti clockwise orientation होची that is minus half ताले थर्ड इलेक्ट्रॉन रो स्पिन क्वांटम रो वैल्यू कोन हबो either it will be plus half or it will be minus half आउ तो वैल्यू पॉसिबल नहीं सो थर्ड इलेक्ट्रॉन रो स्पिन क्वांटम नंबर जोटा फोर्थ क्वांटम रो वैल्यू कोन हबो either plus half हबो नहले minus half हबो because these are the only two possible values ताले देखिए अबे कौन हबो हमको प्रिंसिपल कोन कहउची कोनसी दुईटा इलेक्ट्रॉन चारटा क्वांटम नंबर समान नहीं परिबो नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑल देयर फोर क्वांटम नंबर्स सेम और अलाइक देखो जदी थर्ड इलेक्ट्रॉन रो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो जाउची ताहले e1 आउ e3 रो चारटा क्वांटम नंबर समान हो जाउची इफ द s वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज a value of plus half then e1 and e3 are having all their four quantum numbers same which is against पॉलीजेस्टरल प्रिंसिपल कोन कहउची ना कोनसी दुईटा इलेक्ट्रॉन चारटा क्वांटम नंबर समान हे परिबो नाही त माने प्लस हाफ वैल्यू हे परिबो नाही तार ठीक अछि माइनस हाफ को जिवा माइनस हाफ को गले कोन हबो ना e2 आउ e3 रो चारटा क्वांटम नंबर समान हे जाउची ताले थर्ड इलेक्ट्रॉन रो जदी स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू माइनस हाफ होची ताले कोन होची ना e2 आउ e3 दे आर हैविंग ऑल देयर फोर क्वांटम नंबर्स सेम व्हिच इज अगेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ये आउथर कोन होची प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करची प्रिंसिपल कहउची हेई परिबो नाही चारटा क्वांटम नंबर कोनसी दुईटा इलेक्ट्रॉन समान हेई परिबो नाही ताले कोन हला हम गोटे एब्सर्ड रिजल्ट पाइलु वी गॉट एट एब्सर्ड रिजल्ट दैट मींस आवर assumption was wrong so our assumption was wrong and 1s atomic orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin okay so this is not only applicable for 1s atomic orbital applicable for all the atomic orbitals ताले 1s ता केमति लिखवा छुआ तुम कहि सच ऑलरेडी we represent the orbitals in the form of a box so 1s atomic orbital can accommodate 2 electrons गोटे हला पॉजिटिव स्पिन गोटे हला नेगेटिव स्पिन so this is how we conclude that an atomic orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin बुझियला छुआ how we proved it by contradiction method हला so you have to remember the capacity of an atomic orbital is 2 why 2 because जदि सेम atomic orbital ले इलेक्ट्रॉन दुईटा रहउचंती बा तीनटा भी रहउचंती ताले कोन होची छुआ their first 3 quantum numbers will be same तीनटा क्वांटम नंबर समान हो काहे की ना because they belong to same orbital their m value will be same because they belong to the same subcell their l value will be same because they belong to the same cell their n value will be same तेनु प्रथम तीनटा क्वांटम नंबर समान होबा पई बाध्य so how they will differ principle कहउची they will be differing
So how they will differ? Now by fourth quantum number, spin quantum number, and spin quantum number has only two possible values. So if spin quantum number would have more values, then the atomic orbital could have accommodated more electrons. So this spin quantum number value ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ atomic orbital ଅଧିକା accommodate କରି ପାରିଥାନ୍ତା, because କେବଳ ଦୁଇଟା value ଅଛି ଏବଂ electron ଦୁଇଟା କୋଉଥିରେ differ କରିବେ by fourth quantum number, because there are only two possible values, they have to differ by the fourth quantum number, that is spin quantum number. That means the maximum number of electron to be held in an orbital is 2. Maximum electron केतरा रही परिवे 2. Okay students, so this is called Pauli's exclusion principle, which states that no two electrons will have all their four quantum numbers alike, and the conclusion is that the capacity of an atomic orbital is 2 with opposite spin. Then atomic orbital can accommodate two electrons with opposite spin. Okay students, so these are the first two rules which govern the filling up of atomic orbitals. Then next I will give you some assignments. You have to solve them and send it to my WhatsApp number, and I want all of you to participate. बहुत जन करूना हो, majority करूचंती, so thank you all. But जो माने करूना हो, so do participate, solve the assignments and send it to my WhatsApp number. In the next class, we'll discuss the remaining principle, that is called Horn's rule. And I have already told you that Horn's rule is not applicable for all atomic orbitals. It is only applicable for degenerate atomic orbitals. That means orbitals having same energy. Okay. So see you in the next class. This is for today. Thank you very much.